and there are so many programs coming up today. I welcome Good our morning, Principal, Ms. Santosh Kohli ji. I also welcome various principals from neighboring schools of Durgapur cluster and state schools and private CBSE schools of Paschim Bardhaman district. I also welcome all the teachers from various institutions and students, and also our parents and guardians if they're with us. Once again, a hearty welcome to one and all present here. Let's start the day, and without delay, we'll start today with the art good exhibition. morning. Good morning, class. We'll start with the art exhibition directly so that the remaining programs can be completed in due time. Anil sir, please take over. Okay, madam. Thank you. Good morning, all of you. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. अब बताइए कितने बच्चों को आर्ट में पार्टिसिपेट करने में अच्छा लगता है? सर मुझे सर मुझे सर मुझे सर मुझे सर मुझे तो सबको आप लोग कुछ बनाना है? मुझे यस सर यस सर यस सर यस वन बाय वन आप लोग शो कर सकते हैं आर्ट एग्जीबिशन को, यस सर चाहे पेंटिंग हो या पोस्टर हो या एनीथिंग मेड बाय वेस्ट मटेरियल या क्राफ्ट, कुछ भी जो आप बनाए हैं जरा अपना अपना इंट्रोडक्शन दे करके जरा दिखलाइए तो। अनिल सर गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना सर बोल रही हूँ केवी चित्रंजन से। मैं अच्छा, कुछ मटेरियल से कुछ बनाई हूँ, वो मैं दिखाना चाहूंगी। तो यस यस मैडम, यस मैडम, एकदम 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 दिखलाइए। ओके सर। This is the thing, sir, which I have made using shells. सर अच्छा, यूजिंग सेल्स ना? Yes, sir. G20 इंडिया। मैडम इसको जरा हॉरिजॉन्टली रखिए, तो ये वर्टिकली है। अच्छा अच्छा, हॉरिजॉन्टली रखें। उल्टा हो गया, एक बार और रिवर्स। हाँ हाँ, एक बार और कीजिए, राइट साइड से हॉरिजॉन्टल। यू हैव मेड बाय सेल ना? Yes, sir. बहुत अच्छा। मैडम इसको G20 घुमाइए मैडम, ये देखिए। वर्टिकली आ रहा है और तरफ। मैडम हॉरिजॉन्टली थोड़ा घुमाइए एक बार। हॉरिजॉन्टली। हाँ हाँ, एक ऐसे हाँ नहीं घुमाते मैडम, जाइए, राइट घुमाते साइड से जाइए, डाउन, एक बार और घुमाइए, एक बार और घुमा। आप उल्टा घुमा रहे राइट हैं, साइड से डाउन करिए। राइट साइड से एक बार घुमाइए, उल्टा हो जाए। फिर वर्टिकल हो गया, एक बार घुमाइए, बस हाँ, बस सही है। हाँ, यस ओके। ये देखिए बच्चों, ये G20 यही हमारा टॉपिक है अभी तक जितने भी हम लोग कर रहे थे, यानी क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग चिल्ड्रन द बैकग्राउंड ऑफ G20, यही हमारा है। और डेवलप करना है नॉलेज को अमॉन्ग देम, बच्चों को और सभी लोगों को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। ये G20 एक शॉर्ट नेम है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए सेल से बनाया गया, बहुत अच्छा मैडम, वेरी गुड। इसमें सर अभी बनाया हूँ कुछ। अच्छा, सर ये किसका है? देखिए सर, नाम क्या है? होम। सर होम फ्रॉम विच स्कूल? सर केवी अंदाज केवी अंदाज। किस क्लास में हो आप? सर बहुत ही अच्छा। किस सेक्शन में? हाँ, एक मिनट, वन बाय वन। वैष्णवी प्रिया मैं दिखा सकती हूँ? बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये शांति का प्रतीक है कबूतर के ऊपर, और पूरा विंग में पूरे कंट्री का फिगर बनाया है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। सर मैं क्लॉक बनाई हूँ। वन बाय वन बेटा। सर मैं क्लॉक बनाई हूँ। क्लॉक हाँ, चलो दिखाइए तो, बढ़िया, वेरी गुड। ये क्लॉक बहुत अच्छा। अभी देखिए, ये किस चीज के मटेरियल से बना हो, जरा बताओ। सर कप से, ये कप से। अच्छा, वेरी गुड। और ये जो उसमें नीडल वगैरह बनाए हो, क्या कलर करके? सर क्या? सर
जो नील बनाए हो, उसके जो चारों तरफ जो बनाए हैं, वो किस चीज से काट करके बनाए थे? हाँ हाँ, कागज को काट कर। वेरी गुड। किस क्लास के हो? 5 अभिलाषा, 5 सेक्शन, सेक्शन भी बताइए। ए हाईवे फ्रॉम विच स्कूल? केवी चित्तरंजन। वेरी गुड। तनुश्री, कुछ बोलना? तनुश्री, यस सर। शो योर एग्जिबिट, शो योर एग्जिबिट। सर मैंने बनाया। एक एक करके सबों को देखा जाएगा, आज आप ही का दिन है, डोंट वरी। तनुश्री, G20। चल मैं त्रिधा को। अच्छा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के ऊपर पेंटिंग बनाए हो, बहुत अच्छा। तनुश्री, विच क्लास? क्लास 4 केंद्र विद्यालय इंडार। सर एक और बनाए हैं। विच सेक्शन, विच सेक्शन? सर कौन सी सेक्शन में? 2 बनाए हो, उसको सीधा करो। मैंने ये बनाया। बहुत अच्छा तनुश्री, वेरी गुड। सर मैंने ये बनाया है। त्रिधा सर। सबों का 1 बाय 1 देखूंगा। ये कौन है? निरंजन। त्रिधा है। वन अर्थ वन फ्यूचर। निरंजन, सर मेरा नाम त्रिधा है। आप अपना पेंटिंग को हॉरिजॉन्टली रखिए, कीप योर फोटोज हॉरिजॉन्टली, वेरी गुड। G20 के ऊपर बहुत अच्छा है, दोनों तरफ कंट्रीज का फिगर बना। ये क्या वाटर कलर से बनाए हो? नो सर पेंसिल कलर। पेंसिल कलर। विच सेक्शन, विच क्लास बेटा? 5 और विच स्कूल? केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ दुर्गापुर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या बनाई है आप? सर मैं अंकुर बख्शी सर मैंने भी बनाया। वन अर्थ वन फैमिली। ये है अंकुर, विच क्लास और किस स्कूल से हो? इंट्रोडक्शन पूरा दिया कीजिए। कौन सा स्कूल, कौन सा क्लास, कौन सा सेक्शन? आसनसोल आई सपोर्ट। अंकुर बख्शी, अंकुर, ये हमारा स्कूल से है। 5B I think। Yes, ma'am। कमलपुर। मैं अलंकिता मोदक क्लास 5 फ्रॉम केवी सीआरपीएफ दुर्गापुर। मैंने ये रिबन Very से good। बनाया है। सर मैंने ये बनाया है। और ये विलेज सीन बनाया गया है। मऊ किस क्लास की हो? मेरा देखिए। ये मऊ किस क्लास की हो? पेंटिंग दिखा रही हो। मेरा वाला देखिए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। विच स्कूल, विच क्लास? सर मैं क्लास 3 से हूँ और केंद्रीय विद्यालय सीएमआर क्लास 4 केंद्रीय विद्यालय सीएमआर दुर्गापुर से। बहुत अच्छा। अब ये क्या है? बिग प्रतति रॉय। देखिए, खाना भी है प्लस दूसरे का देखना भी है। G20 के ऊपर ये बहुत ही अच्छा स्लोगन था, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग एम्बिशन। ये कौन है? चिंटन, विच स्कूल? चिंतन चक्रवर्ती सीएमआर दुर्गापुर क्लास। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये नूरू गोपाल देखिए, ये विलेज सीन बनाया है, बहुत ही अच्छा है। नूरू गोपाल जरा दिखाइए बढ़िया से, ड्राइंग कॉपी में बनाई हो। ये वाटर कलर है? हैव यू डन बाय वाटर कलर? सर मेरा देखिए। ये आप ही देख रहा हूँ, किस मीडियम से बनाई हो वाटर कलर? पेस्टल कलर। अच्छा, आप किस स्कूल के हो? केवी चित्रंजन। वेरी गुड, बहुत अच्छा वाटर कलर है। सर मैंने भी बनाया। सर मैंने भी बनाया। मैं सबका देखूंगा। हाँ, क्या मैं अपना ये किसका है? सीआरपीएफ दुर्गापुर। मैंने ये बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड।
एक्चुअली G20 का मेन मकसद यही है कि सबको को मिलकर कराना है और सभी को मिल करके प्रोग्रेस करना है और अपने आने वाले। सर मैं भी बनाया। सर मैंने एक और वेरी आज गुड, बनाया बहुत वेस्ट अच्छा। मटेरियल से। हाँ दिखाइए, सर मेरा इसका देख लेते हैं वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल, हाँ प्रियंका, प्रियंका की पोस्टर्स इन हॉरिजॉन्टल। पिंकी ने कुछ क्राफ्ट बनाया है। पिंकी दिखाओ तो बेटा। इनकी ये आप कछुआ बनाया, टॉटॉय। नो मैम, अभी से कॉल को ये बताओ। किसमें इनकी गिव योर इंट्रोडक्शन। सर मैं भी बनाया। गिव योर इंट्रोडक्शन, गिव योर इंट्रोडक्शन। सर मैं भी बनाया। ये पिंकी जो बनाई है किस मटेरियल से बनाई है मैम? प्लीज। सर मेरा नाम अभिषेक पटेल है, मम्मी का आईडी से ज्वाइन किया हूँ। सर मैं भी बनाया। सर मैंने भी बनाई हूँ। सेक्शन है क्लास 5। गीतांजलि, मैं भी बनाया। नेशनल फ्लैग। सर ये वाला शिवलिंग सर मैंने भी बनाया। सर अंकुर ये सबको एक साथ मत बोलिए। गीतांजलि, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही जवाब देंगे। गीतांजलि, विच स्कूल? हाँ लैंडस्केप, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। जमीन का पोर्शन ज्यादा दिखाया गया। दिखाओ बेटा। दुलाल, आदि फ्रॉम के आशा सुनो। आप किस स्कूल के हो? केवी कौन सी है? कौन सी क्लास, कौन सी क्लास? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनिल सर, ये नम्रता, नम्रता क्या दिखाना चाहती है इसमें आप? नम्रता इस पेंटिंग में क्या दिखाना चाहते हो? इसको सीधा कीजिए। काजी नजरुल इस्लाम। सेव अर्थ, ये टॉपिक हो गया सेव अर्थ। अपनी पृथ्वी को बचाना बहुत जरूरी है। नीचे पानी का है पोर्शन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर। अनिल सर, हाँ मैडम। आपके स्टूडेंट किंगशुक अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन अच्छा। एक कुछ बनाया है आपको दिखाने के लिए बोला है। हाँ आपको एकदम, पूरा दिखा आप देती हूँ। उसके जगह में आप दिखा सकते हैं। वेरी गुड। रुकिए, कैसे दिखाऊं समझ में नहीं आ रहा है कैमरा को। बस कैमरा के सामने रखे ना, हो हाँ जाएगा। आ रहा है, आ रहा है। ये देखिए पेपर मैश से पेन स्टैंड है। वाह, ये पेपर मैच का है ना? हाँ पेपर मैश से बनाया है और 2 हिरन है सर। वाह, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट दिखा क्राफ्ट। रही हूँ। ये सभी बच्चे देखिए, ये पेपर मैच का काम है। पेपर को, जो अखबार का पेपर होता है, उसको गीला करके आटा जैसे गूंथा जाता है रोटी बनाने के लिए, उस तरह गीला करके उसको साना जाता है और वो क्ले का जैसा हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ क्ले। देन आफ्टर, उसके बाद उस क्ले को, क्ले का जैसा भी मॉडल आप बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। ये वेस्ट मटेरियल के द्वारा बनाया हुआ पेन स्टैंड एक्सीलेंट है। इस तरह का बहुत सारा सामान आप बना सकते हैं घर में। बहुत बहुत अच्छा मैडम। प्लीज एक बार मेरा देख लीजिए। एक बार नहीं, 10 बार देखूंगा, लेकिन वन बाय वन। हाँ, ये कौन है? नीरू गोपाल। ये व्हाट इज दिस? क्या बनाए हो? बर्ड्स बनाए हो ना? वेरी गुड। ये क्राफ्ट पेपर है, अलग अलग कलर में मिलता है। सर ये भी बनाओ। किस क्लास में हो? कौन सी स्कूल? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर मैंने ये दोनों बनाया। हाँ, G20 के ऊपर ये है। और भी क्या नाम है बेटा? सर मैंने घर बनाया है। ये मोनिका किस स्कूल की हो? सर केवी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या मोनिका,
पूर्वी। मैंने घर बनाया है। सर मेरा भी देखिए ना। कुछ बोलना। सर मैंने हाँ, ये देखिए एलिफेंट बनाया है। बहुत अच्छा। बताते किस स्कूल के हो? सर केवी अंडाल। वेरी गुड। किस स्कूल के, किस क्लास में? सर क्लास 4। सर प्लीज मेरा बहुत देख लीजिए सर। बहुत अच्छा। सभी स्टूडेंट से, और ये कुछ सभी बर्ड्स स्टूडेंट्स हैं। प्लीज ये दूसरे का देख लीजिए। G20। बहुत अच्छा। यस, जूली फ्रॉम व्हिच स्कूल बेटा? फ्रॉम व्हिच स्कूल? आवाज नहीं आ रही है, बोलो। जूली अपना माइक ऑन कीजिए। ऑन योर माइक। कौन से क्लास में हो? वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बर्ड्स बनाए हो, इसको बोलते हैं वॉल हैंगिंग। कहीं भी दीवार में इसको लटका सकते हैं, वॉल हैंगिंग। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये कौन है? हाँ, यस मैडम। जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस के फोटो होते हैं उनको कट करके कोलाज बनाया है। कोलाज, इसको कोलाज पेंटिंग बोलते हैं। अलग अलग जगह से पेपर कटिंग करके चिपका करके बनाना। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और ये उसी से रिलेटेड है ना, जो कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं? मोर देन दैट, जो भी अच्छा, प्लेसेस है ये बेसिकली इंडिया का है। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको अच्छा जगह पे, प्रॉपर जगह पे लगाया जाएगा इसको। एक्सीलेंट हुआ। सभी बच्चे को देखना चाहिए। ये क्लास पेंटिंग बहुत ही आसान होता है। मैंने बनाया और किनको दिखाना है? जरा दिखाओ, जरा दिखाइए अपनी पेंटिंग को। मैंने घर बनाया है। दूसरे का देखना भी सीखिए। ये धरा आपको दिखाना है पेंटिंग। मैंने बनाया। ये पहले धरा को दिखाइए बेटा। ये देखिए, वेजिटेबल, वेजिटेबल से दिखाया गया है। हरी मिर्च, टमाटर, G20। ये दोनों मैंने बनाया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। सर मैंने कार्डबोर्ड ये एक मिनट, धरा, ये जो जी लिखी हो, क्या चीज यूज की हो जी में? बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने भी बनाया ये केवी आसनसोल, केवी आसनसोल धरा। और कुछ है? एनीथिंग मोर? सर मैंने पोस्टर बनाया सर G20 के ऊपर। सर मैंने कार्डबोर्ड से घर बनाया है। सर मैंने ये दोनों बनाया है। सर मैंने ये दोनों बनाया है। पेंटिंग दिखाओ बेटा। मैंने भी एक बनाया है। सर मैंने ये वाला वन बाय वन। मैंने कार्डबोर्ड से हाउस बनाया है। सर मैंने ये दोनों बनाया है। सर धरा, यस, ये देखिए कितना अच्छा है। सीस्केप, बर्ड्स फ्लीइंग।
वेरी गुड, सर ये बहुत मैंने अच्छा, बनाया। बहुत मैंने अच्छा, दोनों बनाया है। बहुत लाइक, सर सब्जियों की मदद से बहुत अच्छा। और किस है? सर ये मैंने बनाया है। हाँ हाँ, देख लिया, देख ये लिया। बना सर मैंने ये दोनों बनाया है। मेरा भी देखिए। सर मेरा नहीं है। कार्डबोर्ड से एक हाउस बनाया है। बनाया है सर, आप वो वाला देखिए। अच्छा बच्चों थोड़ा सुन लीजिए। हेलो मैंने बच्चों। ये घर बनाया। इसमें बहुत हेलो क्लास, आप सभी ना सुन लीजिए पहले। आप सभी माइक्रोफोन म्यूट करके एक बार कैमरा ऑन करिए और सब एक साथ दिखाइए। और लग्नजिता मैडम से रिक्वेस्ट है, मैडम एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए, सब एक साथ पे होगा फिर एग्जीबिशन जैसा ना। सभी बच्चे माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट कर दीजिए और वीडियो ऑन करके एक साथ दिखाइए सब कोई, ताकि हम फोटो ले सके। लग्नजिता मैडम एक फोटो ले लीजिए, या कोई भी टीचर जो है अभी, लवली मैम, जयंती मैम, एक फोटो ले लीजिए मैडम, पूरा सबका एक साथ स्क्रीनशॉट, फोटो इन द सेंस स्क्रीनशॉट, कौन सा ड्राइंग बाकी? सभी एक साथ, यस सभी मैम। बच्चे एक साथ एग्जिबिट करें, चिंतन दिखाइए, सृष्टि, गरा, अन्वेषा, अन्वेषा वेयर इज योर पेंटिंग। हाँ बहुत अच्छा, सब एक साथ दिखाइए, स्ट्रेट रखिए, हाँ अलंकिता ठीक रखिए वैसे ही, वेरी नाइस, सब एक साथ, ओके मैम। वेरी नाइस ओके चिल्ड्रन। मैम। ओके मैम। थोड़ा सा रखिए, फोटो लिया जा रहा है, थोड़ा सा रखिए आप। मैम मेरा यस मैम। सबका देख रही हूँ, कोई बात नहीं करोगे, म्यूट कर दीजिए। लवली मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अर्चना मैम भी दिखा दीजिए, जयंती मैम तो दिखाई रही हैं, अर्चना मैम भी दिखा दीजिए। ओके मैम। वेरी गुड, डन हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया मैम, लवली मैम, जयंती मैम। संगलाप सर, संगलाप सप्ताह मैम लीजिए। मेरा देखिए। हाँ बेटा बहुत सुंदर है, मैम मेरा देखिए। वेरी नाइस ब्यूटीफुल। मैम मेरा देखिए। मैम मेरा शतकी है क्या, गणेश जी का फेस? ओके ओके, बहुत सुंदर, अच्छा एक बात मैम सुनिए, मेरा अब एक बात देखिए। सुन लीजिए। हेलो चिल्ड्रन, मैम मैंने खरगोश बनाया है। हाँ वेरी नाइस। अच्छा मैम मैंने बात खरगोश सुनिए अभी, बनाया है। मेरी बात सुनिए आप। अभी आप लोग का हो गया है ना सेशन, अभी दूसरा सेशन शुरू होगा हम लोग का। तो आपका एक्सीलेंट रहा, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से बनाया, और भी बनाते रहिए, और हम लोग रोज ही थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। सुन लीजिए, हाँ अभी आपको ग्रुप लीव करना है, ताकि हमारे 9 to 12 के स्टूडेंट, तनुश्री बहुत सुंदर बेटा। अच्छा अभी आप लोग लीव करिए, अभी आप लोग ग्रुप लीव कर दीजिए। बनाया है। बाय चिल्ड्रन, बाय करिए, बाय बाय। बाय, टीचर प्लीज स्टे बैक, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। और क्लास मैम। बाय मैम। मैंने ये कुछ बनाया है क्या? मेरा थोड़ा देख लीजिए। बहुत सुंदर है तनुश्री, गुड बनाई हो बेटा। बाय मैम। मेरा थोड़ा देख लीजिए। मैम और मेरा आपका कुछ, मैडम अभी तो देख लीजिए। बाय मैम। मैम मेरा थोड़ा देख लीजिए। हाँ मैंने ले लिया बेटा, फोटो सबका ले लिया। मैम मेरा थोड़ा देख लीजिए। बस तनुश्री एक्सीलेंट, बाय मैम। बाय बेटा, बाय चिल्ड्रन। अच्छा अभी आप ग्रुप छोड़िए, करिए, चलिए मैम को बाय करिए, बाय।
बोलना है। मैम मैम मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। मैम आज क्लास नहीं होगा। आज और आपका कुछ नहीं है बेटा, अभी सीनियर बच्चों का है। अभी आप लीव करिए ग्रुप, तभी हमारे सीनियर बच्चे ज्वाइन कर सकेंगे। ओके। मैम प्लीज चलिए। मैम मेरा थोड़ा देख लीजिए। हाँ बेटा, देख रही हूँ, बहुत सुंदर है। मैम मेरा देख लीजिए। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैम मेरा थोड़ा देख लीजिए मैम। हाँ, देखिए बहुत कुछ बनाइए। ग्रुप मैम लिफ्ट मैम करिए, ग्रुप लिफ्ट करिए। मैम मेरा थोड़ा मैम देख लीजिए। देख लिया, अभी आप ग्रुप लिफ्ट करिए प्लीज। प्लीज लीव द ग्रुप चिल्ड्रन। चिंतन, लिफ्ट करिए बेटा। सभी ग्रुप लिफ्ट करिए, खाली टीचर्स रहेंगे, अभी सीनियर बच्चे ज्वाइन करेंगे, है ना। मैम मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। मैम बोलो अच्छा से। बाय मैम। से बाय। बोलो अच्छा से। बाय मैम। बाय रानी। बाय मैम। बाय बेटा। अभी लिफ्ट करिए ग्रुप। बाय मैम। बाय मैम। अश्विता लिफ्ट करिए। शिवम, प्रगति लिफ्ट करिए बेटा। निर्मला ग्रुप लिफ्ट करिए। मो, बाय मैम। अभी लिफ्ट करना है। जल्दी से ग्रुप लिफ्ट करिए। पुनीत, निर्मला, सीनियर बच्चे ज्वाइन करेंगे, है ना। निर्मला ग्रुप लिफ्ट करिए, अभी सीनियर बच्चों का सेशन होगा बेटा। श्रेयांश, लीव द ग्रुप। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। 9 से बच्चे ज्वाइन करेंगे, बाकी बच्चे लीव कर दे। श्रेयांश लीव करिए। मैडम श्रेयांश को भी रिमूव कर दीजिए। हेलो कुंदन। कुंदन, आयुष, अभी बेटा सीनियर बच्चों का सेशन होगा। हाँ, आप लोग लीव करिए। निर्मला, कुंदन, आयुष, आप छोटे बच्चे हो ना। अभी 9 ऑनवर्ड्स बच्चों का सेशन होगा बेटा। हाँ, आप लीव करिए। मैडम आपके पास होप्सो की रिमूव करने का ऑप्शन होगा। हाँ, लग्नजिता मैडम से मैं बोली हूँ कि मैडम रिमूव कर दें। मैडम प्लीज रिमूव द स्मॉल चिल्ड्रन, अदरवाइज 9 to 12 cannot join। चंदा बेटा, आप लीव करिए बेटा, अभी सीनियर बच्चों का होगा। मैडम उसको ले लीजिए। हाँ, एक बार सीनियर बच्चे दिखा दे। अच्छा रिचा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, किस क्लास में हो। क्या मैम, मैम क्या फ्रेश लिंक क्रिएट करने से सही रहेगा क्या? नहीं रहने हाँ, वो दीजिए भी कर फ्रेश लिंक सकते मत हैं, कीजिए। वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, यही है। गुड मॉर्निंग मैम। फ्रेश लिंक करना नहीं है, फ्रेश लिंक छोड़ गुड दीजिए। मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड आप लीव, मॉर्निंग मैम। बेटा आप गुड लोग अभी मॉर्निंग लीव मैम। करिए। सीनियर क्लास होती कृतिका, है ना। हेलो मैम। अशोक, हाँ आप हाँ, अगर जूनियर सेक्शन में हैं तो प्लीज लीव कर जाइए। क्लास आयान 9 ऑनवर्ड सब ज्वाइन करेंगे अभी। लेट हो रहा है बच्चों, आप लीव करिए। धरा बेटा छोड़ दीजिए ग्रुप, मम्मी है ना।
धरा, ऋचा मैम का ही आयांश होगा लीव ये। करिए, आयांश प्लीज लीव, चंदा लीव, कुंदन लीव, कुंदन लीव करिए, दिया क्या सायम, सायम किस क्लास में हो बेटा? क्लास 3 है। बेटा आप छोड़ दीजिए, मत अभी कर जाओ। आपकी और कुछ नहीं है, लीव करिए ग्रुप। सायम, आप ये ग्रुप छोड़िए अभी, है ना, अभी बड़े बच्चे आएंगे। लग्रेजिता मैडम इन लोग को रिमूव करिए ना प्लीज। ओके मैम। दिया किस क्लास में हो बेटा? दिया, क्लास 4। दिया इज इन क्लास 4। आर्यन कुमार, आर्यन कुमार, दिया नोनिया, बोलो। यस मैम। माधवी कुमारी, मुक्ता प्रामाणिक, माधवी कुमारी, मैम, मैम मेरा। हाँ बहुत सुंदर है ये, और किसका है, बहुत सुंदर है, लेकिन अभी आप लीव कीजिए ग्रुप, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। माधवी कुमारी, 9 से नीचे जो बच्चे हैं वो ग्रुप को लीव करे, इमीडिएटली लीव करिए बेटा, लेट हो रहा है हम लोग का। हो आयुष गया लीव वैसे। करिए, ग्रुप लीव करिए, आपका सेशन नहीं है अभी और ज्वाइन मत करिए। आयुष, हाँ क्लास 1, आयुष, आयुष हाँ लेफ्ट लेफ्ट, ओके। अच्छा, अभी तो टीचर्स ये। वर्षा किस क्लास में हो बेटा? हेलो वर्षा, माधवी, वर्षा रानी इज फ्रॉम चित्रंजन, विच क्लास मैम? शी इज टीचर मैम, ओ सो शी इज माय सॉरी। स्टूडेंट। वर्षा रानी खलको। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। एंड माधवी? माधवी को लीव कराओ, माधवी इज इन क्लास 3 आई सपोज नाउ। मैम देन प्लीज आस्क हर टू लीव। माधवी, सुशील सर, जी मैम। हैज आवर गेस्ट जॉइंड? माधवी कुमारी, माधवी कुमारी आप लीव करो, आप प्लीज। हाँ, प्लीज चेक। दिया नोनिया, Yes, I have बच्चे तो joined. लेकिन है ही नहीं, बच्चे ज्वाइन ओके करने ओके, वेलकम सर। Our students have not yet joined. लग्न जीता मैम, दिया नोनिया देखो, हाँ ओके। सर से बात हुई मैडम, ज्वाइन कर रहे हैं सर? प्रिंसिपल सर, हम्म। सर ऋतिशा, थोड़ा अर्जेंट काम से 10 बजे निकले हैं, सर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सर ने कहा कि हम सर से बात कर लेंगे, राजेश सर से। थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, सर को निकलना पड़ा। कोई बात सर के नहीं। रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे दिव्जानी मैम हैं। ओके ओके। अब बच्चे नहीं ज्वाइन किए अभी तक? वही वेट कर रही हूँ थोड़ा सा सर। गुड मॉर्निंग मैम। As long as the duck gets that gap, he's fine. That makes his speed, his power, his batteries. Outside of the top 250 in the world coming off that wrist surgery. जो बाकी केवीएस के जो टीचर्स यहाँ पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अपने अपने स्कूल्स में 9 to 12 के बच्चों को, जैसे सुबह भी लिखा गया था, उनको बोलिए ज्वाइन कर ले। आवर गेस्ट स्पीकर इज वेटिंग। सभी स्कूल्स के बच्चे ज्वाइन कर ले, 9 to 12 जो भी टीचर्स यहाँ पे हैं, अपने अपने बच्चों को बुला लीजिए प्लीज। अशोक नाम से जो भी हैं,
मैडम रिमूव मॉर्निंग कर मैम। जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। मैम क्या बोलते हैं कि 4B का कब से क्लास स्टार्ट होगा? क्या छुट्टी के बाद? नहीं मतलब अभी जो ऑनलाइन अभी हो आप रहा लोग है। का नहीं है मैडम, बच्चों को रिमूव कर दीजिए ग्रुप से। अभी ओके आज उन लोग का और कुछ नहीं है, अभी सीनियर बच्चों का है। ठीक ओके, है, थैंक यू मैम, थैंक ओके ओके मैडम। यू। Okay, so why keep our guests waiting? Can we start, Sushil sir? जी मैम, श्योर। Okay. Sir, good morning. Rajesh sir, all the गुड मॉर्निंग teachers मैम। present here, uh, students from 9 to 12 who are still joining, Sushil sir, ओके। Debjani madam, teachers from neighboring KVs, principals, vice principals from various institutions who are with us today. I extend a warm welcome to one and everyone present here. Today, we are very fortunate to have among us Mr. Rajesh Kumar. Sir is Associate Professor in BITS Pilani, Rajasthan. And to make this day special, let us extend a welcome from our students, sir. Our students Anvesha Manna and Ahana Manna, they have sung a welcome song, and we'd like to present that song online. Lagnajita ma'am, please play the video. Wow.
you, Anvesha and Ahana Manna, for the welcome song. And we are very proud indeed to have Sir among us. Sir is an example by himself in the sense that Sir started his primary education in a remote village in Bihar, but he became the second topper in Delhi University in maths honors. And he took admission in IIT Roorkee. From there, he went to Germany for higher education with 100% scholarship along with a stipend. After completing his PhD from Europe, he came back to his motherland and joined IIT Bhubaneswar as assistant professor, and presently sir is working in BITS Pilani as an associate professor. And sir, we are really thankful to Sushil sir also for having contacted you, and we are getting an opportunity to listen to you. Teachers and students, they're still joining, but really it's a very big opportunity for us to be able to be in touch with you and listen to you. So most welcome. I request Debjani ma'am, uh, Madam is PGT Physics in our Vidyalaya, senior teacher. Ma'am, please extend a welcome address to sir. Thank you, ma'am. Good morning to all. As we are celebrating district level Jan Bhagidari activities on G20, NEP and FLN, today Professor Rajesh Kumar, Associate Professor BITS Pilani, Rajasthan is among us. On behalf of KV Asansol, it's my pleasure to extend a hearty and gracious welcome to our guest, Mr. Rajesh Kumar, Associate Professor BITS Pilani, Rajasthan. Ranu ma'am has already introduced sir with our students, and I hope in this present era, sir lecture will motivate our students. So I would like to request you, sir, to continue your session. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Okay, so thank you, Ranu ma'am, for giving this detailed introduction, and thank you, Devzani ma'am, for giving the welcome speech. And I think I should also thank here Sushil Kumar, who is giving me the opportunity to interact with I would say our young kids especially, but I think here as some teachers are also here. So I would say the young talents of our country. So basically this talk, as I came to know from Sushil, so this is based on under this National Education Policy 2023 or 2020. So of course, I think you are already aware of this policy, but in one line, because my motive is not to focus on that policy, but in one line, I would like to mention about the novelty of this policy is in the sense of multidisciplinary studies. So basically, nowadays, this is one of the most hot topic, I would say, or interesting and challenging topic nowadays for many, or I would say for all of us who are interested to do the research. And why I'm saying research, because this is the basic tool, or if you want to improve your country's ranking across globe, research is the only possibility in education that can increase the name and fame of your country. Okay, so again, why multidisciplinary studies is important. So of course I will explain by giving some applications of mathematics and combination of this mathematics with some other disciplines. So of course in this talk I'm not going to teach you some mathematics or some subject, but what I can say that in this talk of, let's say, few minutes, I can try to motivate our young minds why mathematics is important, what are the novelties and the beauty of the subject, and why one really needs mathematics in life. Okay, so I'll share the screen and I'll start giving some applications. So I think this talk would have been much beneficial if I would have been there as offline mode, not in online mode, but at least with this online we can connect this on. So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let me ask from the audience, can anyone tell me any application of mathematics? This is, believe me, this
is one of the, I would say, nice subject or beauteous subject of this, like the best subject in overall whatever you study. This is really one of the nice subjects. So anyone, you study algebra, you study probability, you study coordinate geometry, any of the subject, any of the application, can you mention? So I'll start my talk with giving some motivations. Where are the applications? Okay. And it's possible that in this talk, after that talk, you will realize that maybe you do not know the mathematics, even the simple algebraic computations, such that a plus b is b plus a. You have studied this, right? But I'm going to explain that in general, this is not true. Of course, there are some conditions here under what we can say the sum is not commutative. Commutative means a plus b is not equal to b plus a, or ab is not ba. But this is one example. But of course, this one you will not get into touch until you go into the research. You don't need this until you go into the research of mathematics. But at least it will motivate you that these simple things which you learn during your school days, a plus b is b plus a, and I'm claiming that this in general is not true. Okay, but before this, let me come to some applications. One application, let me write here about optimization. Have you ever thought, कि जो postman होता है, he gets, let's say, 100 letters, and that 100 letters he has to distribute among 10 cities. So have you ever thought that in which city he should start and how he should travel? Let's say he is here and he wants to distribute to 10 different cities. Have you ever thought that how he should approach? He should go to this city first, then this city first, or this city second, this city third. How he should approach this? Who will give this? So what will be his main motive? Anyone from class 11, 12? What will be the motive of the postman? How he should plan his travel to visit these cities? He will have two motives, right? Of course, there are many, but at least two. What he can say that मुझे ऐसा प्लान करना है कि मेरा जो टोटल टाइम ट्रेवल हो वो मिनिमाइज्ड हो, राइट? जो ट्रेवल टाइम होगा वो मिनिमाइज्ड होगा. एक तो ये उसका मोटिव हो सकता है. कैन बी द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम. Right? So this, with these two motive, at least this you can understand that these two are very basic motivation one postman can have, that he should have the travel time can be minimized and the cost of transportation can be minimized. Okay, then how he will decide? This one can be only solved by by this mathematics subject. Okay, this we call optimization problem. In optimization problem, you have some cost which you want to minimize or maximize. Okay, subject to some constraint. ऐसा नहीं होगा ना कि सारे रोड बिल्कुल 3 लेन और 4 लेन रोड होंगे, है ना? तो कुछ रोड्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे बिल्कुल डिस्टरबेंस हो, देन he won't prefer that road. Okay, so what I mean to say कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स whether you want to minimize the travel cost, okay, or you want to minimize the cost of transportation subject to some given conditions. कि एक रूट में हो सकता है पूरा रेनी सीजन हो उस रोड में, okay, then he has to avoid that road. So there are many constraints involved. So as a mathematician हम क्या करते हैं? We consider all the conditions are ideal. But if you see the realistic problem, जो engineers होते हैं या जो realistic problems जहाँ पे face करना होता है, they don't make it real ideal. They try to disturb the parameter, और उस केस में क्या होता है? Problem difficult होता चला जाता है, and one develops the new technique to solve the problem. Okay, and
one interesting application of this optimization is army allocation. Okay, now what I'm going to tell is will really surprise you कि जो procedure है, okay, let's say during the first world war, okay, during the first world war, basically in US army people, they developed the scheme to identify, because they were having the limited army people, और they were having the limited army people, और उनको क्या करना था, अलग अलग एरिया में एलोकेट करना था. So they thought that how we will allocate the army, limited army, so that we can get maximum benefit out of it. ठीक है, तो उन्होंने ये ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक यूज किया एंड दे डेवलप्ड वन मेथड, इट्स कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड. ओके, अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा दैट मेथड अबाउट इट, बट लेटर ऑन एटलीस्ट दिस विल मोटिवेट यू कि जो इट्स नॉट नेसेसरी दैट सम टेक्निक्स आर developed only by mathematicians. Even some army people have developed the technique that how we can find it the optimum allocation of the army people. ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. Let's say you see industry. All of you, I think, it's familiar with the Hindustan Lever Limited, or you can say manufacturing of furnitures. हमारे पास क्या होता है? You have one industry. Okay, what he will see? He will see कि हम इंडस्ट्री वहां पे बनाएं, वहां पे हम एलोकेट करें जहां पे मेरे पास रॉ मटेरियल इजी से आ जाए, और क्या हो सकता है, मेरे पास जो लेबर कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, है ना. सो ऑल दिस फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर दैट रॉ मटेरियल कैन बी रीच्ड in by at minimum cost, labor cost is minimum, raw material can be easily available, there are many parameters involved. ठीक है, so all this comes under optimization, and this optimization is basically, industry क्या सोच रहा होगा, industry will think that I have all the allocations, I have all the facilities, and I want to sell the products and I want to maximize the profit. Okay, so here you can say your objective function is the profit, which one has to maximize. Okay, again by giving some constraint, subject to some constraint. Constraints क्या है? Basically our labor cost be minimized, raw materials should be easily available, and so on. So basically all this you will see it is solved by mathematics. Okay, so at the moment now at least you have this one application that why mathematics is required. Okay, now I come to this scheme, you can say NEP, or I can say multidisciplinary research or multidisciplinary studies. You also study chemistry. Any application where mathematics and chemistry both are involved. Okay, it's not easy to see, but I can give you various example. One simple example, you can see you use freeze in every day, or in everybody's home we have the freeze refrigerator, right? To keep the product biofresh or keep the product fresh in refrigerator, one titanium dioxide nanoparticle is used. Okay, TiO2 nanoparticles are used. Now the question arises, how these nanoparticles are produced. तो होता क्या है, in industry basically you have a very big particle. Okay, you have a very big particle of some size, and what we do, we apply some mathematics to break this particle in nano scale. Nano means you can understand it's very small teeny scales. Okay, so हमारे पास क्या होता है, in experiment we have a very big particle in the beginning, and then we apply some mathematics. Of course you will not understand this formula, but let me just write this. This is the formula, you can understand कि ये कितना difficult है at the moment. So this is the mathematical formula. What we do, we apply this formula on the big particles, and after 2 hours, 3 hours, 4 hours, we get these particles in very small scales. Okay, and those particles are used in the refrigerator to keep the product fresh. So now you understand that this mathematics and this chemistry are together. So जो engineers होते हैं, what they do,
इफ यू सी दिस बी एक्स वाई एस वाई, ठीक है, ये क्या करता है, ये रेट बताता है कि किस रेट से मेरा एक पार्टिकल जो है वो ब्रेक हो रहा है। ओके, सो अगर मेरे पास ये वाई साइज का पार्टिकल है तो किस रेट से ये मेरा पार्टिकल ब्रेक हो रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस बी एंड एस। सो एज ए मैथमेटिशियन व्हाट आवर जॉब इज टू सॉल्व दिस मैथमेटिकल इक्वेशन बाय कंसीडरिंग दिस बी एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तुम इसे कांस्टेंट ले सकते हो, इसे x प्लस वाई ले सकते हो, इसे एक्स वाई ले सकते हो। But engineers, what they do, they, as I said, they apply the experiment in the laboratory. So instead of constant, they consider another constant C naught. Instead of x plus y, they consider some constant into x plus y. और जहां पे ये C क्या होता है, this is some force. It can be stress force, it can be friction force between particles, it can be some different force. So as a mathematician क्या होता है, these problems are not easy to solve. तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं, बट इन रियलिटी दिस कांस्टेंट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। ओके, but of course we are not going to into the details, but what I am trying to say is you can see the application of chemistry and mathematics together. Okay, nowadays the most important application of mathematics is in biology. I think many of you may be aware that जो biologists होते हैं, जो medicine पे काम करते हैं, they basically apply the experiment on rat, cat or some small insects they take. ठीक है, but अभी क्या हो रहा है, we do not want to kill the insects or we do not want to kill the animals. In that case, how the experiments will be done? So of course एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एक्सपेरिमेंट करते ही क्यों हैं? We need the experiment because you see, company makes tablets, right? For example, let's say paracetamol, because all of you are familiar with this medicine. How paracetamol is manufactured in the industry? We again need mathematics, and this equation again is involved here. This is called breakage equation. Okay, this is called breakage equation, and to make the paracetamol again we need this equation. So to make the tablets in the industry we need some mathematics. Okay, and you understand, in the tablet you can see 20 mg, 10 mg, and doctor prescribed 2 tablets a day, 3 tablets a day. Have you ever thought कि 3 tablet क्यों कह रहे हैं, 2 ही tablet क्यों नहीं खिला रहे हैं कि सुबह शाम ही खा लो? So of course nowadays we are doing all this research together with some medicine people that अगर हम 3 की जगह हम 2 ही डोज लें, but of course this should cure the disease. Okay, so what can be the mg? एवरेज दोनों का लें, क्या करें, एवरेज लें, किस तरह से एवरेज लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ओके, बट ऑफ कोर्स व्हाट आई जस्ट मीन टू से इज मैथमेटिक्स इज अगेन एवरीवेयर हियर. ओके, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इंस्टेड ऑफ किलिंग द रेट और इंसेक्ट्स, हम क्या करते हैं, वी डू द सिमुलेशन, मैथमेटिकल सिमुलेशन. हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को रन करते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, and we observe the result. Okay, and based on the results, based on the observation of the experimental results, we come to some conclusions. ठीक है, इसी तरह का एक एग्जांपल और ले सकते हो. You see that अभी if you have heard about some disease, cardiovascular disease, okay, और blood flow, कई बार blood clot हो जाता है ना, एक साथ कहीं एक जगह पे blood जमा हो जाते हैं. Okay, there is a mathematics called coagulating blood, coagulating fluid. Okay, again this is similar kind of equation. वहां पे क्या होता है, wherever you see कि 2 particles combine हो रहे हैं और एक बड़ा particle बना रहे हैं. Like blood clotting में क्या होता है, blood drops जो होते हैं वो आपस में stick होते हैं और वो एक बड़ा particle droplet बना देते हैं. So that is again comes under blood flow, और वो we explain by another integral equation. ठीक है, I'm just writing this equation, you don't have to understand it. Okay, but what I mean to just say that this mathematics is involved there. Of course, if I explain this equation you will easily understand it, but I think we do not have that much time. Okay, but this is again some mathematics involved. One can ask about probability, है ना, uncertainty, कहाँ पे probability कहाँ यूज कर रहे हैं. I think this lecture is just to motivate you कि अब जब तुम क्लास में जाओगे तो I would say कि you should really ask your teacher as well
कि सर हम ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहाँ है, why we are reading this subject, either it's mathematics or chemistry or physics. Science is really useful everywhere, so of course you should ask your teacher or yourself. Nowadays you play games on your mobile, okay? Instead of that, sometimes you should also search where mathematics is involved, where physics is involved, and believe me, you will see tremendous applications of these subjects, not only mathematics but all of the subjects. Okay, for example, probability, it's uncertainty. Wherever you have uncertainty, probability is involved. Okay, for example, let's say underwater ground water flow, जमीन के नीचे पानी फ्लो हो रहा है, राइट? वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड द अंडर द ग्राउंड and we do not know what are the materials inside. So water is flowing, but I don't know whether some stone is disturbing this flow, or some soil is disturbing the flow, or some cotton is disturbing the flow. We do not have any information. तो हम क्या करते हैं? We assume कि उसमें अंदर soil है, then what is the flow rate? और अंदर cotton है, then what is the flow rate? So if you study probability, जहां पे तुमने देखा होगा कि binomial distribution you have studied, binomial distribution, okay, or Poisson. I don't know if you have studied also Poisson, but binomial I'm sure you have studied this. This is x success out of n success, okay, but this is just to motivate that biology is also probability is also used. Okay, if you study differential equation, तुम देख रहे हो ये सारे differential equation है. Cooling machine, cooling coffee अभी है ना तुम्हारे पास, you have the microwave, you have seen the microwave in your house. You take a cup of coffee, you put it inside the machine, okay, and you want to see how much time it takes to get it hot, or to sometimes if you put it in the refrigerator, how much time it takes to get it cool. Okay, all this can be modeled by the mathematics. Okay, now these are applications. Now I would suggest that you please search sometimes on Google that what are the applications of mathematics, or mathematics with biology, mathematics with chemistry, and so on. Now let me come to give you some really novelty of mathematics. Have you heard about, let me ask you this, let me write 3.156. Computer क्या करता है? Nowadays you cannot work on this manually. हम क्या करते हैं? We write the problems in computer and computer solve the problem for us. Okay, तो अगर let's say I have this decimal, computer will not take this many digits unless you ask it to take it. Okay, क्या करता है वो? up to 2 decimal, 3 decimal, 4 decimal they truncate it, है ना? कभी तुमने ये सोचा है 3.165? if I say write only up to 2 decimal, तो क्या लिखेंगे? 3.17. if I say 3.164, you will write 3.16. Is it correct? Do you study this? Have you studied this? किसी ने पढ़ा है ये कि अगर हमारे पास ये जो नंबर है अगर 5 है, rounding off? Is it rounding off, sir, to the next higher digit? Yes, it's rounding. Okay, so basically we have studied that if this digit is 5 or bigger than 5, then basically we add 1 to the previous digit, and that's why here you have 3.17. Here, since it's 4 less than 5, I just write 3.16. So it's rounding. Okay, there is another term, is called chopping. So if I say just chop it, then both digit will be same, 3.16, 3.16, because we just chop. We don't care about the next digit. Nowadays this is really very important. Okay, because normally what we have when we solve this kind of equations, mathematical equations, it is not always possible to solve it mathematically. तो हम क्या करते हैं? We solve it on computer, and computer does this rounding or chopping. इस केस में क्या हो रहा है? We are having error, है ना? मुझे 3.165 लेना था, बट मैं ले क्या रहा हूं? 3.17. तो कुछ तो एरर है, and because of this error you will have different answer. So तुम्हें we need to check that how much answer will differ if I go things. So I'll try to explain by giving some simple example. This is a quadratic equation. You do not want to solve it, you want to computer to solve this.
वो क्या करेगा, he will write the formula x is minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. Correct? Now what this number is 10 power 5 plus minus जो इनसाइड टर्म्स हैं ये क्या है 10 पावर 10 माइनस 4. कंप्यूटर क्या करेगा 10 पावर 10 इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर कंपेयर टू दिस 4. वो क्या करेगा इसको अप्रोक्सीमेट कर देगा 10 पावर 10 स्क्वायर रूट से, दैट इज नथिंग बट 10 पावर 5. What you will get the answer 10 power 5 plus 10 power 5 by 2. Your answer is 10 power 5 comma 0. So your two roots are, one root is 10 power 5, another root is 0, which is totally wrong. Now believe me, if you want to solve this in computer, you will use this formula, you will get two answer, whole day you will spend and you will not able to find कि ये problem कहाँ हो रही है. There is problem. Why? Because you know one formula, the product of the root is c by a. What is c by a? It's 1. So x1 x2 is 1, but here x1 x2 is 0. So there is a problem. But where is the problem? We do not see any problem. So the problem is here. Problem is here. You cannot do this one. But the reason is 10 power 10 is a very large number, and with minus 4, basically you are having loss of digit. Okay, this is called catastrophic cancellation. इसका क्या मतलब है बेसिकली कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, अगर या तो हम उसका डिफरेंस ले रहे हैं, ओके, या अगर हम एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत छोटा नंबर है उसका डिफरेंस ले रहे हैं, देन बेसिकली यू हैव दिस प्रॉब्लम्स कैटास्ट्रोफिक कैंसिलेशन. तो प्रॉब्लम इज कि हम इस केस में हम इसको दूर कैसे करेंगे. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टेक्निक, बट वन टेक्निक इज सिंपली यू नो दिस x1 x2 इज 1. हम क्या करेंगे प्लस वाला रूट ले लेंगे. ओके, क्योंकि 10 पावर 5 माइनस 10 पावर 5 दोनों ऑलमोस्ट सेम डिजिट का है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं. तो आई वोंट टेक द नेगेटिव साइन, I'll take the first root as 10 power 5 and then I'll use this formula. Then my second root is 1 by 10 power 5, which is 10 power minus 5. तो एक रूट मेरा हो जाएगा 10 power 5, another root is 10 power minus 5, है ना. तो I think now you are little bit now you are getting the interest of the subject क्योंकि you have studied this quadratic equation, है ना. Another one also I can give. There are many example one can cook here. Okay, let's say this I want to compute. Okay, this number you want to compute where x is 10 power square. क्या होगा? This is square root of 10 power 8 plus 1 minus 10 power 4. Again in computer you will get, it will give you this number as 10 power 4 क्योंकि 1 जो है if I add it to 10 power 8 it's a very small number. So 10 power 4 minus 10 power 4 it's 0. But ये 0 नहीं है. ओके, इस केस में क्या करें, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी क्लोज टू 0 बट इट्स नॉट 0. हम क्या करेंगे इसमें इन 11 12 और इवन इन 9 10 you have studied, right? You multiply by the conjugate. You multiply by the conjugate and you divide by the same. Now this is a plus b, a minus b, so it's a square minus b square divided by this number. So basically you have 1 by some number and you will get something in decimal. Okay, so this is the way one can avoid this catastrophic cancellation. ठीक है. एक दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, and sir. and please tell Yes, me sir. कि कितना टाइम है I can take because I can speak a lot about all this. Okay. Carry on, sir. No issue. Time, no issue. Okay, so one of the most important and interesting results which I can explain you and you will be understanding this is solving linear system of equation. I think all of you solve it, even starting from 9 or 8 to, I think it's starting from 8 I can say you can solve it, or maybe from 9. 3x equal to 9. What is the solution of this equation? Every student will say, sir, 3 is the answer. Right? Because you divide both sides by 3. So 3 is the answer, correct answer. Now let me do it little differently. यही तो कर रहे हैं हम. X equal to 1 by 3 into 9 यही तो कर रहे हैं.
Now what you do, you say 3:3, so you say 3 is the answer. Let's do it little differently. जरूरी नहीं है कि हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं. There is a approach. If you study in mathematics, basically we use this formula x equal to a inverse b. Okay, जहां पे हम पहले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं. तो you do 1/3. मैं इसमें नहीं जा रहा हूं. If you have not studied this, it's fine. What I am trying to say, 1/3. पहले हम डिवीजन कर लेते हैं. What is the answer? 0.333 into 9. Is it 3 now? Is this product 3 now? Answer is simply no. अब दिख रहा है कुछ? This is really the beauty of this subject, okay? कि in reality ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा 1/3 जो है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है. तो अगर मैं पहले डिवीजन कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, एंड आई कैन डू द ट्रंकेशन, राउंडिंग अप टू 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट अप टू सो ऑन, बट डजंट मैटर, you will not get exactly 3. It is close to 3 but not exactly 3. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो 1/1 था ना. Let's say you take x plus 2y is equal to 3 and 2x plus 3.9999y is, let's say, 5.999. You can say this is, यहाँ पे एक इक्वेशन था, एक वेरिएबल था. यहाँ पे क्या है? 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है. जो रियलिटी की प्रॉब्लम होती है उसमें जो ax होता है, प्लीज टेल मी मैम, if students they know this system of equation can written in this form. I think 11 12 मैडम can clarify. Devjani ma'am, do our Yes, students they know. Yes. Yes, yes. okay, then ma'am, actually what I want to say is कि जो अभी का जो प्रॉब्लम होता है ना, let's say car designing, okay, have you ever thought कि जो कार का आगे का जो पार्ट होता है वो ऐसा टिल्ड क्यों होता है? कुछ दूसरे शेप में क्यों नहीं होता? तो एज ए मैथमेटिशियन व्हाट वी डू, वी सिमुलेट कि वहां पे जो ऑप्टिमम शेप क्या हो सकता है. वहां पे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रिड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. और वो जो ग्रिड्स का प्रॉब्लम होता है, बेसिकली ये ए और बी कहां से आता है? ये यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम ऐसे दे दिया, देन यू आर राइटिंग इज एक्स इक्वल टू बी, बट जो ये ए और बी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो राइट हैंड साइड है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है. ओके, सिंपल एग्जांपल अगेन मैं बता रहा हूं. लेट्स से कि तुमने एक सिटी ले लिया, लेट्स से आसनसोल. ओके, यू से एट 9 o'clock द टेम्परेचर ऑफ आसनसोल इज 10, एट 10 o'clock द टेम्परेचर ऑफ आसनसोल इज 11. व्हाट इज द टेम्परेचर एट 9:30? कोई डाटा नहीं है हमारे पास. हम क्या करेंगे, 10 और 11 का एवरेज ले लेंगे. यू कैन से इट्स 10.5, बट ये जरूरी नहीं कि सही हो, बिकॉज आई एम डूइंग द एवरेजिंग. इसको हम और करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम 9:10 पे भी डाटा कलेक्ट करेंगे, 9:20 पे भी डाटा कलेक्ट करेंगे, 9:30 पे भी करेंगे, और हर एक 10-10 मिनट इंटरवल पे करेंगे. जो सबका डाटा होगा उसका एवरेज लेके निकालेंगे. इससे भी अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है कि हम 9:05 पे करें, 9:10 पे, 9:15 पे, हर एक 5 मिनट्स इंटरवल पे करें. तो बेसिकली ऑल दीज आर डाटा. और ये आई थिंक यू आर फेमिलियर कि वेदर फोरकास्ट वी कैन चेक इट ऑन द कंप्यूटर कि 5 डेज का वेदर फोरकास्ट क्या है, 10 डेज का, 1 वीक का क्या है. हाउ दे डू इट? दे यूज मैथमेटिक्स सिमुलेशन. वही करते हैं, वो हर एक मिनट का, हर एक 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स इंटरवल का डाटा लेते हैं, एंड दे बेस्ड ऑन दैट डाटा, ओके, दे ट्राई टू फाइंड कि वो नेक्स्ट टाइम पे डाटा क्या होगा. दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन. ओके, बट अगेन मैथमेटिक्स इज देयर. बट व्हाट आई मीन कि ये जो डाटाज हैं, यू कैन स्टोर इन द मैट्रिक्स ए एंड बी एंड यू सॉल्व इट. एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताता हूं, फेस रिकॉग्निशन. अगर मैंने तुम्हें, मान लो 10 क्रिकेटर्स हैं, एक क्रिकेटर के मैंने आईज दे दिए, सारे क्रिकेटर्स के मैंने आईज दे दिए तुम्हें, एंड आई आस्क ये क्रिकेटर कौन सा क्रिकेटर का आईज है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दिस इज कॉल्ड फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम. हम क्या करते हैं, इन सारे सेलिब्रिटीज के आईज का डाटा कलेक्ट करते हैं. क्या करो तुम, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स. व्हाट यू डू, यू टेक ए पिक्चर फ्रॉम योर मोबाइल. ठीक है, उस पिक्चर को तुम इंपोर्ट करो कंप्यूटर में. देखो वो क्या देगा, दैट विल गिव यू डाटा इन 2 डायमेंशन. ओके, वो 2 डायमेंशनल डाटा देगा तुम्हें, एंड दैट 2 डायमेंशनल डाटा इज नथिंग बट मैट्रिक्स. ओके, तो हम क्या करते हैं, हर एक
फोटो, हर एक क्रिकेटर का फोटोग्राफ लेते हैं, उसको कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करते हैं, वी गेट ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मैट्रिक्स का कोरिलेशन निकालते हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। नाउ अभी लीनियर अलजेब्रा आ रहा था कि वी आर यूजिंग अलजेब्रा, वी आर हैविंग मैट्रिक्स, नाउ यू यूज प्रोबेबिलिटी दैट यू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन द आईज, और जिसके कोरिलेशन कम है या ज्यादा होंगे, बेस्ड ऑन दैट यू आइडेंटिफाई कि कौन सा पिक्चर किसका होगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज इन्वॉल्व देयर, बट व्हाट आई मीन टू से कि जो ये ax इक्वल टू b है, इसका साइज होता है नॉर्मली व्हेन यू सॉल्व द रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कार डिजाइन और फेस रिकॉग्निशन, इस मैट्रिक्स का साइज होता है 10 पावर 10, सॉरी इट्स 10 क्रॉस 10 आई वुड से। जो मैट्रिक्स का साइज होता है बेसिकली यू कैन से 10 पावर 5 क्रॉस 10 पावर 5, दिस इज मिनिमम साइज आई वुड से। अब तुम समझ सकते हो, मैंने 3x इक्वल टू 9 लिया था, आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ 3x इक्वल टू 9 and with this small different two different technique, one technique is direct multiplication, here you divide 9 by 3, but here I divide 1 by 3 and then I multiply by 9, you get two different answer just with one simple variable. If I have 10 power 5 into 10 power 5, that means your variable is 10 power 5. How you will check कि मेरा जो solution है वो correct है या नहीं है? This is a very challenging topic nowadays, and believe me, one institute is in USA, it's called MIT, I think maybe many of you have heard. They say that 90% of the mathematician involved their computation to solve ax equal to b. So if you or any of us can come up with some different technique to solve ax equal to b efficiently, the linear system जो कि तुम पढ़ते हो अभी 11-12 में, अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं efficiently मीन्स टाइम कम लगे सॉल्व करने में और मेरा कॉस्टिंग भी जो है कम आए, ओके, देन वी कैन रियली अर्न ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द इंडस्ट्री। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल तुम्हें यहां दिखा रहा हूं। आई एम जस्ट शोइंग वन एग्जांपल टू द स्टूडेंट्स। यू हैव x plus 2y is 3, 2x plus 3.999y is 5.999. What is the answer here? Your answer is x equal to 1, y is equal to 1. You can apply any technique. You can multiply this equation by 2, okay, and you subtract from the second equation, you will get x1, y1. You can see it satisfies the equation. Later on, one of your friend come and say, no, you have done some mistake. This data is not 3.9999. This data was 4. Sorry, let me keep this one same. He says, this is fine, but this right hand side is not 5.99, this is 6. Okay, one of the person who solved this equation and he got 1 he will say it's okay, doesn't matter, you are just changing this data to 0.0001. यही तो एरर है। ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो लीनियर सिस्टम है ये कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, कमिंग फ्रॉम द रियलिस्टिक प्रॉब्लम। तो अब व्हाट यू आर सेइंग कि ये जो, तो हमने तो इसको सॉल्व कर लिया 5.999 एज्यूम करके, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि 5.999 नहीं है। While reading the data we get some mistake and it's 6. One of you will say it's okay, you can have the same answer, x is 1, y 1. But you will see now it's not true. You multiply the first equation by 2 and you subtract from the second equation. क्या आएगा? 3.999, right, minus 4 into y equal to 0. This implies y equal to 0. और जब y 0 होगा then your x is 3. Are you getting this? अभी तक सॉल्यूशन क्या आ रहा था? 1 1. Now what is the solution? Your solution is 3 0. कहां मिस्टेक हो रहा है? कहीं मिस्टेक नहीं है। हमने डाटा क्या गलत ले लिया? 0.00001. It's a very small error. You will feel na, even everybody will feel that this is a very small error. And believe me, the similar kind of problem I stuck during my PhD, during my research time. And one day I spent, I could not find where is the problem. But later on I realized that okay, I cannot solve it like this. Your solution cannot be correct by doing this one. हमें क्या करना होता है? बेसिकली जो प्रॉब्लम यहाँ पे थी, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था? 1/3 में प्रॉब्लम थी। अगर 1/3 मेरा एग्जैक्ट होता तो मेरे आंसर एग्जैक्ट होते।
तो मतलब 1/3 मेरा नंबर जो है, वी से इट्स इल कंडीशन नंबर, वी से इट्स इल कंडीशन नंबर। यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा मैट्रिक्स का डाटा है 1 2 2 3.999, दिस इज योर मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज योर राइट हैंड साइड 3 and 5.99। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड इल कंडीशन मैट्रिक्स। और वो हमें चेक करना होता है कि जो मेरा ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, वो मेरा इल कंडीशन मैट्रिक्स है या वेल कंडीशन मैट्रिक्स है। अगर इल कंडीशन है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, अगर वेल कंडीशन मैट्रिक्स है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आवर मोटिव, हमारा मोटिव क्या होता है कि अगर मेरा मैट्रिक्स इल कंडीशन है, सिस्टम इल कंडीशन है, तो हम उसको वेल कंडीशन बनाते हैं। ओके, सो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स वन कैन कंस्ट्रक्ट। ओके, एंड सिमिलरली जो मैंने कहा था शुरू में, a plus b is not b plus a, so I'll give you 3 number, you can take 2.235, 3.454. okay, you can sum these 3 number, first summing this and summing this, or you sum these two and then you sum this, or you sum all 3 together. You will see that you get different number if rounding and choppings are used. Okay, so I think there are many example. Even let's say last, I would say you want to solve x plus 5 equal to 0. What you will get, x equal to minus 5 is a root. On real line you will say this is the solution. You say x equal to minus 5 is a solution, right? So what do you mean? Minus 5 is a root of the equation. हम क्या करते हैं, basically we see this part. You draw the curve of this line of this equation, x plus 5 is 0, and you see where it touches the x axis, है ना? This is your x axis, this is your y axis. ये तो easy exercise था. Let's say I want to find x cube plus e2x plus sin x बराबर 0. What is the root of this equation? ये तो हो सकता है ना? What is the root of this equation? We cannot find it by plotting the graph. Okay, then we go with the numerical method, that how one can find the zeros of this function. Okay, so you will learn, I think in the first year if you go, that basically there are various numerical technique. Numerical technique means instead of getting exact root, I can say that we get approximate root. For example, I can say minus 4.999. This is also a root of this equation. Of course it is not exact, but it is approximate, or you can say close to exact. Okay, so numerical method क्या करता है, exact ना दे के आंसर approximate आंसर देता है. Okay, so these are the basic tools or basic things in mathematics which I think you will be aware of this, or you will learn if you go in higher and higher education. So tell me if you want to ask something, because of course there are many examples one can construct here. Okay, so if you want to ask something, you are most welcome. Otherwise I'll end my talk with this. Children, if you have any questions, please ask. Teachers also can ask. Yeah, all of you are welcome to ask anything, whatever you feel. So I think this was just an introductory lecture, or just a motivating lecture why mathematics is involved. So. Yes, sir. Thank you so much. It was a very engaging session, and it was like a new way that we are seeing mathematics, the queen of sciences. And we are really very happy to have you with us. May I request the Jani Madam to propose a vote of thanks, ma'am, please. Thank you, sir. So nowadays, I have a question before that. Nowadays, students are very less motivated towards the research. Normally in general science, maths like this, they don't find interest in maths and physics. They feel it as very dry subject, and parents are also they are also not motivated towards this. So what's your view, sir? Regarding this, what as a teacher, what we feel that they are not motivated towards the research.
Yeah, ma'am. Actually, that's the main goal. That basically first they need to identify that these subjects are really very interesting, and we have their day-to-day life applications. We can see. So what I also feel the most important point is whenever we teach some subject, even when I teach to my class, I always ask the students because I teach in engineering college and they are engineers, they are mechanical, civil, metallurgical, and other engineers. So first question I ask that you should really ask yourself, or you can disturb your teacher. That please tell me what are the applications of this when I'm reading these subjects. Because unless you have the motivation, you will not get into the field that you really need to understand or you need to study this subject. So I would suggest that you should also see the motivation and you should motivate the students in this way that these subjects are Nidita really. ma'am, please mute that someone now. Disturb. Yes, sir. So you should really motivate the student that you should really see the applications of mathematics. Now you can see the optimization, probability, all the subjects are really interesting. And I feel that of course if somebody goes into the engineering field or medical branch, they don't see the research. But even in the medicine people, in India हम क्या करते हैं? Okay, या तो engineer बनो या फिर doctor बनो. Dr. Van. But doctors can do a very good research because they have the experience of medicine and they can do really good research in terms of making or manufacturing the tablets or medicines. And so Yes, of course without innovation, nothing can be done. Innovation is must in every field. innovation is required, ma'am. Innovation is required everywhere. Why doctor prescribe 3 or 4 tablets a day? Why not only 1 or 2? One tablet. I waste time and because it's not easy to remember. It's not easy to remember कि हमने 3 बार लेना था 3 बार ले लिया 4 बार ले लिया. Or any students, any questions? So, एक thank you मिनट for, 1 minute मैम आई वांट टू से समथिंग First of all, I'll thank you. I am thankful to Dr. Rajesh Kumar for presenting such a wonderful session, and definitely it will be very benefited to all other students who have joined the session. Students, one more thing and more surprise package to you that on 12th of June, one more surprise package from NCRT headquarter. Dr. Pratima Kumari, Associate Professor from NCRT Headquarters, New Delhi, will join the session and definitely give wonderful insights to all of you about the education and how education will be more motivated, inclusive education, integrated education should be there. So therefore, there will more bright and you can say good insights about the education will be there for you. So this is a request from the KV Asansol side that all of you should join in a large number also in 12th of June. Thank you, everyone. Ranu madam. Yes, sir. Yes, Devjani madam. thank, thank you, sir. And your talk was, thank you for your wonderful talk. And your talk will really helpful will for our students, and as a teacher I feel that this is the integrated and interdisciplinary approach. It should be our way of teaching so that the students get interest in the subject. You have shown how mathematics is correlated with chemistry, biology, military applications, interpolation, face recognition, etc., and how mathematics can be done in a very interesting and innovative way. So I feel that this will be very beneficial for our students, for us teachers. Your talk was very motivating for us. Thank you, sir, once again. Thank you, ma'am. Thank you for everything. Okay. Okay, children, we can leave and again join tomorrow. Okay, let's call it a day. Thank you, sir. Thank you, everyone.